in the garden, and then I'm gonna share what actually happened, because garden vibes are really great, very beautiful. So let's go. Where should I sit? Near flowers. Guys, I'm hiding myself behind a rose tree, rose plant, I mean, tree plant, I don't know. Yes. I feel so safe here. Just see above me, rose का झाड़. Okay. ये भाई मच्छर खा रहे हैं. Wait a second, guys. Wow, guys, it feels like a cave here. So I'm gonna share my UTI story with you. Finally, मैं बैठ गई हूँ. I thought of laying down there because, but now you know. The rain sits the bee. सब सो रहे हैं, इसलिए मैं अंदर वीडियो नहीं बना सकती. धीरे धीरे की बोल के क्या ही फायदा. So I thought I should come out in garden and just make a video sharing my story, my experience of UTI. UTI is very commonly found in girls. It is urinary tract infection. जो आपको होता है तब जब आप अपना हाइजीन प्रॉपर नहीं रखते हैं, एंड जब आप यूरिन को अपने अंदर रोक के रखते हैं for a long period of time when you don't urinate, you know, pass out urine, you know. तभी मैं कह रही हूँ, मतलब मैं ये शेयर इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ऐसी गलती मत कीजिए. The way you know I did, like 1 month back I went out. I had to complete some office work, government office work. Obviously not my father's office where I can go and really, you know, pass away the papers and tell them to do the formalities quickly. No, I have to stand there in line for hours, and I was standing there in a huge line where, you know, there were so many people who wanted to complete their work one by one. So I was standing there, and then but there was no washroom around me. And then I thought कि अभी जल्दी से काम हो जाएगा, then I will come back and then I will, you know, I will go to come back to home. But बहुत टाइम लग गया मुझे, वहीं भी टाइम लग गया. And एक पॉइंट पे ना मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ दैट ओके वो अर्जेंसी वाली फीलिंग भी चली गई थी. एंड उसके बाद आपको एक ऐसा मोमेंट आता है देन यू वॉशरूम भी जाना था. तो वही मेरे साथ हुआ. इतना टाइम हो गया कि मैं भूल गई कि आई नीड टू गो टू द वॉशरूम ऑल्सो. आई नीड टू रिलीव माई सेल्फ बीइंग आउट बैक. शाम हो गई, सुबह से शाम. मैं एक बार भी वॉशरूम नहीं गई. एंड देन आई केम बैक. And then when I came back, I changed my clothes and then I went into the washroom and I tried to pee out. इतना ज़्यादा मुझे पेन हुआ. It was so much painful, guys. Really, it's not funny. It's not, you know, anything that is like. It was a really painful thing for me. That's why I want to share to you, and I want to give my feedback also, like how you can treat yourself at that point of time if you face UTI or if you're facing UTI right now. So yes, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे को क्यों हो रहा है ऐसा. मेरे को बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ कि मुझे ये क्या हो गया. Then I couldn't pee properly. The main problem was this, and I was feeling so much burning while you know, urinating. और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही थी, एंड बार बार मुझे वॉशरूम जाना था आफ्टर एवरी 5 मिनट. आई डिडंट स्लेप द होल नाइट. बहुत प्रॉब्लम हुई. माई बॉडी स्टार्टेड शिवरिंग. वो इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा ग्रो हो जाता है कि आपको फीवर हो जाता है उससे. तो जैसे आपको जैसे थ्रोट में इन्फेक्शन होता है ना, द सेम वे यू गेट इन्फेक्शन व्हेन यू गेट इन्फेक्शन इन योर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यू गेट फीवर द सेम वे. तो जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो आपको फीवर कॉज करते हैं आपकी बॉडी में. फीवर इज़ अ गुड थिंग दैट यू हैव टू ट्रीट योर बॉडी. दैट्स अ गुड सिम्टम कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. बट येस, मुझे शिवरिंग स्टार्ट हो गई, फीवर होने लग गया. माई बॉडी स्टार्टेड पेलिंग, येलोनेस हो गई थी बॉडी में काफ़ी. एंड मैंने घर वालों को किसी को भी नहीं बोला, नॉट इवन माई मॉम, बिकॉज आई थॉट शी माइट जज मी और शी माइट feel so much worried. I tried to cure myself on my own, मैंने सोचा कि मैं कुछ करती हूँ, रिसर्च करती हूँ यूट्यूब पे, गूगल पे. And then I researched and then I saw so many natural homemade remedies also कि आप ये वाला जूस आप सेलरी जूस पी लीजिए, आप अदरक का जूस पी लीजिए. नो, अदरक का जूस पीना वॉज अ बैड आइडिया बिकॉज अदरक भी तो काफ़ी एसिडिक सा होता है ना. सो द मेन प्रॉब्लम ऑफ बर्निंग वॉज कि आपका जो यूरिन है वो एसिडिक हो गया है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको अल्कलाइन सिरप की ज़रूरत पड़ती है, जो मुझे नहीं पता था उस पॉइंट पे. बट आई ट्राइड
all my brain to cure myself on my own, but I failed, I really failed. And then I shared this with my friend, and she told me that you should seek an online doctor. Just ask her that what you can really help yourself out staying at home at this point of time in COVID. So I asked her, she said like what really happened, like what control urine inside your body, inside your bladder. Then I said yeah, I did, because I was out of my house and मुझे unhygienic washrooms नहीं पसंद कि मैं बाहर जाके कोई washroom में use करूँ उसको. Then she said कि you're stupid, like अगर आपको unhygienic washroom पसंद नहीं है, it doesn't mean that you make your body unhygienic. Don't worry, I will give you a syrup. अगर ये syrup आप पियोगे तो आपको जो burning sensation है वो कम होगा, एंड ठीक भी हो सकता है आपका इन्फेक्शन, बट इट विल टेक टाइम. लाइक अगर आप 2 days ट्राई करो इस सिरप को, एंड अगर ये काम करता है तो वेल एंड गुड, अगर काम नहीं करेगा यू हैव टू सीक डॉक्टर फिजिकली. तो आई सेड ओके डॉक्टर. देन आई बॉट दैट सिरप द नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे फ्रॉम the nearby chemist shop. So yeah, I took that syrup, alkaline syrup. I will give the link in the description box, because वो आपको ना आपके यूरिन को न्यूट्रलाइज कर देता है. वो एसिडिक नहीं रखता है, तो बॉर्निंग नहीं प्रिवेंट कर सकते हो पर क्योर नहीं कर सकते होम रेमेडीज से. डोंट गो फॉर होम रेमेडीज. ऑफ कोर्स यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, बट ऑल्सो टेक मेडिसिन. ऑल्सो go to doctor and ask for medicine. Take some medicine, take some antibiotic. Just don't try to treat yourself like I did, because it really don't help. So that's all. I think I have given enough information. फिर मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गई. मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गई. उन्होंने मुझे कहा कि आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए. मैंने एंटीबायोटिक ली, एंड एक ही एंटीबायोटिक खा के ट्रस्ट में गाइस बिल्कुल ठीक हो गया मेरा तो. बट एज वी हैव टू कम्प्लीट द कोर्स ऑफ. चाहिए अगर आपको UTI है, और अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, एंड खुद को प्रिवेंट करके भी रखिए इस चीज़ से बाय हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज समर्स में ज़्यादा डोंट डू अ मिस्टेक ऑफ like me of controlling urine inside you. Don't do that. It's the worst thing to do, to try to harm yourself. And yes, I can really feel you how UTI makes us feel. So take care, stay blessed and stay tuned. And if you haven't subscribed, do subscribe. And I'm gonna enjoy the sun bath now. Bye bye. Love you all.